Good morning, all of you. So, today I am going to teach you a new chapter, that is practice self control, which is chapter number 3. So, what is self control? Self control का मतलब क्या होता है? It means exercising control or restraint over one's action and feeling. अपने ऊपर कंट्रोल करना. Developing self control is a slow process, but this is very good habit. Okay. So here is a story of two friends, John and Alan. Although they came from different backgrounds, Alan and John were very good friends. They both were very good friends, and they both came from different backgrounds. Alan hailed from a middle class family, whereas John was from a poor family. एलन जो था वो मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन जॉन जो था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. Being poor, he knew the value of money very well. जॉन को मनी का वैल्यू बहुत पता था because he was very poor. Most of the time he was hard up for cash. उसके ज़्यादा टाइम उसके पास पैसे नहीं रहते थे. And he wants. The money he earned was very little in respect of his own and his family's need. जो वो कमाता था वो बहुत ही कम मनी था, बहुत कम पैसा था उसके लिए और उसके फैमिलीज़ के लिए. So he was often forced to borrow from his friends and neighbors. इसीलिए उसे हमेशा कर्ज लेना पड़ता था अपने फ्रेंड्स एंड अपने नेबर्स से. नेबर्स का मतलब पड़ोस. John was always very careful about the money he spent. Needless to say, he felt very sad about his condition and affairs. So John बहुत नीड था उसे मनी का, and he was very pity on himself. He often pondered का मतलब सोचना, if his situation would change for the better in future. However, he was an optimist. So he was very needy. वो बहुत needy था, लेकिन he was an optimist. वो बहुत ही ज़्यादा होप रहता था उसे that वो एक दिन बहुत अच्छा बहुत रिच हो जाएगा. He believed that things would not remain the same for the long. और जैसा अभी है ऐसा टाइम नहीं रहेगा, उसका टाइम भी चेंज होगा. Very soon he would have lots of money. But from where? How? He had not figured that out yet. लेकिन कैसे, कब, ये सब इसने अभी तक नहीं सोचा था. One day on impulse he spent $10 and bought a lottery tickets. ऐसे ही अचानक बिना सोचे हुए उसने $10 खर्च कर दिए and he bought a lottery ticket. He kept it in his purse and forget about it. 2 months passed. One evening when he was sitting idle in his home, he received a message. वो अपने पर्स में रखकर उसे भूल गया था. 2 मंथ पास हो जाता है एंड देन एक शाम वो अपने घर पे ही वॉज सिटिंग आइडल का मतलब ऐसे ही बेकार में वो बैठा हुआ रहता है. ही रिसीव्ड अ मैसेज, उसे एक मैसेज आता है. इट रेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव हिट द जैकपॉट, यू हैव वन $10 million. सो उसका जैकपॉट लग गया था. ही वन द लॉटरी एंड ही वन. लॉटरी में कितना प्राइस उसने जीता था? $10 million. जॉन कुड नॉट बिलीव हिज आइज. ही रेड द मैसेज अगैन एंड अगैन, thinking that it might have arrived at the wrong address. He looked at the address. The address was correct. उसे believe नहीं था अपने लक पर. वो बार बार एड्रेस चेक कर रहा था, but the address was correct. His excitement knew no bounds. He jumped with joy. वो खुशी से जंप करने लगा था. He pinched himself again and again to be sure that he was not dreaming and had really won the jackpot. If his time had really changed for the better. He immediately shared the news with Alan. Naturally, Alan was happy for him. So he was very happy. He shared this happiness with his friend Alan, and Alan was also happy after listening his jackpot. The first thing John did after receiving the money was to buy a costly new car. एक न्यू कार उसने खरीद लिया सबसे पहले. Slowly he started spending money on unnecessary things.
फालतू के चीज़ों पे वो पैसे को वेस्ट करना स्टार्ट किया. ही थॉट आई हैव इनफ मनी एट माई डिस्पोजल, इट कैन नेवर एंड इवन इफ आई वेस्ट इट और स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स. वो क्या सोच रहा था कि मैं अननेसेसरी चीज़ पे भी स्पेंड करूँगा, वेस्ट करूँगा, फिर भी मेरे पास इतने पैसे हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे. एलन ट्राइड to explain to John that it was improper to waste money. This way he would soon exhaust all his money, but his advice fell on deaf ears. John spent thoughtlessly. बिना सोचे समझे वो स्पेंड करता गया, वो वेस्ट करता गया मनी. बट एलन, उसका जो फ्रेंड था, उसे समझाता रहता था दैट ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगा. बट वो बहरा हो चुका था, वो डेफ हो चुका था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. ही फेल्ट लाइक अ किंग. वो किंग की तरह सोचने लगा, उसे महसूस होने लगा. ही वॉज वेरी हैप्पी. फाइनली अ डे केम व्हेन ऑल हिज मनी वॉज एग्जॉस्टेड. एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसका सब मनी एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया. ही हैड नो मनी लेफ्ट एज ही हैड नॉट सेव्ड एनी ऑफ इट. एक भी मनी उसने सेव नहीं किया था, इसलिए उसके पास एक भी मनी नहीं था. वंस अगैन ही बिकेम पुअर. और फिर से वो पुअर बन गया. ही लैक्ड मनी इवन टू फुलफिल हिज एवरीडे नीड्स, ऑल बिकॉज ही हैड नॉट बीन एबल टू डिसिप्लिन हिमसेल्फ एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिज टेम्पटेशन. अपने लालच के ऊपर उसने अपना कंट्रोल नहीं रखा एंड दिस इज हाउ इट एंड्स. उसका सब पैसा भी खत्म हो गया एंड ही वॉज अगैन बिकेम poor. So what is the moral of this story? That we should have self control on ourselves. Self discipline keeps us motivated, helps us overcome laziness, prevents wastage and makes us successful. So this is the back exercise of your book, page number 22. Fill in the blanks. Dash is a food habit. Dash food is a bad habit. So having no control on food. जब हम लोगों का कंट्रोल फूड पे नहीं होगा तो वो क्या रहता है, बैड हैबिट रहता है. ओके. द मोस्ट कॉमन रीजन विच स्टॉप्स अस फ्रॉम लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ इज आवर वांट फॉर शॉर्ट टर्म और इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. सबसे कॉमन रीज़न क्या होता है हमारे डिसिप्लिन लाइफ को लीड करने का, मिसलीड करने का, दैट वी वांट शॉर्ट, हमें जल्द से जल्द चाहिए रहता है जो हमें, एंड इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. All good dash and dash leader have self-control. Spiritual and political leaders have self-control. Learning to practice self-control is not easy. Yes, it's very tough job. It's very tough. ये बहुत easy नहीं है अपने ऊपर कंट्रोल करना. John was unable to exercise control over his temptation. Put tick against the correct sentence and cross against the wrong sentence. Being self-control is not worth it. False. We should avoid wastage of food. True. हम लोगों को food waste नहीं करना चाहिए. In short, all of us have many choices. Yes, we all have many choices, but we should control on ourselves. After hitting the jackpot, John felt like a king. Yes, John won $1 million in the lottery. No, it's false. John won $10 million in the lottery. Now draw lines and match the following. You have to not draw the lines because it will look very messy. Just you have to write the numbers how I have written here. All of us attend birthday parties. Okay, all of us attend birthday parties. One number. Now second, learning to practice self-control is not easy. Okay, practice to self-control is not easy. Self-control help us abstain from irreligious acts. John spent thoughtlessly. बिना सोचे समझे John spend कर रहा था पैसा, and at last he became poor. Alan, middle class family. So what is your homework? You have to fill this in your book. Thank you.